मैं कभी कभी स्टोरीज सुनता हूँ जो तुम लोग मुझे सुनाते हो, मुझे ऑलमोस्ट फिक्शनल लगती है वो सारी चीजें. He was shocked to see us on the call. He was like, we were expecting a Mr. Dev and a Mr. Singh. Who are you girls? यार तुम्हारा नौकरी भी कौन से लेवल पे था ना, तुमको इट वाज अ वेरी वेल पेइंग जॉब. उसमें जो क्रिएट करके बिल्ड करने का मजा है ना, दैट इज व्हाट इज कीपिंग दैट फायर बर्निंग इन आवर बेली. ये स्पेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, यू नो. देयर इज अ सेड अनसेड रूल कि मैन हैज टू ड्रेस सिंपल. उसको पहनना है तो पहनने दो ना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन हैव द पेशेंस टू फाइंड द सोल्यूशन. कौन परेशान करता है? जे तुमको कौन परेशान करता है? मुझे बहुत लोग परेशान करते हैं. कौन? बहुत लोग, बहुत मैंने नोटिस किया है यार. पहले ना मैं बहुत अच्छा होके मैंने सबको जमा वमा करने की कोशिश की. साले सब मेरे ही बारे में, मेरे ही पीठ पीछे बात करते हैं. लोगों को क्या प्रॉब्लम? कोई ब्रांड बड़ा होता है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये रोलिंग है. अच्छा, बड़ा होता है तो गांड जलती है ना लोगों की. क्या बोलूं, और उससे अच्छा तो कोई लैंग्वेज में बोल ही नहीं सकता. क्या हर टी शर्ट के साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं दे देते साथ? वाह. यस. मीनाक्षी, यू ओनली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड भाविशा. हाँ. ऑलराइट, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में. ये है महानुभव मिस्टर वॉकिंग जे जाजल, जिसने तहलका मचा रखा है. और हम दोनों जो 4 साल से हसल करके थक नहीं रहे, मीनाक्षी सिंह और भविष्य दवे. वी आर को-फाउंडर्स ऑफ कैप्सूल और बहुत मजा आया है इन बिल्डिंग यू नो व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे एंड बिल्डिंग कैप्सूल इन द लास्ट 4 years. सो आई थिंक आज का कॉन्वर्सेशन भी आई एम वेरी लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम लोग क्या क्या कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं. रोज तो हम लोग बहुत ही बिजी मारते हैं, बट आज ऑफिशियली यू नो वी आर डूइंग दिस. सो लेट्स सी क्या कॉन्वर्सेशन कहाँ तक जाता है. राइट, लेट्स डू इट मैन. इंट्रोडक्शन से याद आया, हाँ. आई डोंट नो तुम्हारे ऑडियंस में कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होंगे टू लिसन टू 2 women co-founders. एक बार एक इंटरनेशनल ब्रांड एक्चुअली पाटा, we were having conversation of onboarding Pata, and the guy who was on the other side, and really good people, he was shocked to see us on the call. He was like, we were expecting a Mr. Dev and a Mr. Singh. Who are you girls? What are you doing here? Like, globally it's a male dominated industry, but it's amazing how the scene is changing. So many women founders have come up in last 2 years, 3 years. मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि कैप्सूल के पीछे एक्चुअली कौन है. यू नो, आई थिंक व्हेन दे सी देयर विल बी अ फेस टू इट, और उनको पता चलेगा कि नहीं, देयर आर 2 वेरी 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 एक्सपीरियंस्ड वुमेन बिहाइंड कैप्सूल. और ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद ही किसी ने अपनी लाइफ में इतना पाया होगा. आई थिंक, मतलब मैं मिट्ठू बनना है तो मैं बोलूंगी कि एक्सपीरियंस एंड कमिटेड, लाइक वी आर एक्सपीरियंस एंड या कमिटेड टू व्हाट वी आर डूइंग. सुपर कमिटेड. क्योंकि मैं कभी कभी स्टोरीज सुनता हूँ जो तुम लोग मुझे सुनाते हो, मुझे ऑलमोस्ट फिक्शनल लगती है वो सारी चीज़ें, कि किसी ने इतना कुछ एक्चुअल में किया है इस लाइफ टाइम में. क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं, अभी बीच में क्या हुआ था कि मैं और भाविशा कुछ बात कर रहे थे, और मैंने बोला यार भाविशा, मेरे को भी 4 स्टोर खोलने का एक्सपीरियंस है. मेरे को भाविशा बोलती है मेरे को 400 स्टोर खोलने का एक्सपीरियंस है. तू मेरे को क्या बता रहा है? उस दिन मुझे अपना थोड़ा जगह पता चला कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, यू नो, और मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो भी किससे. आई थिंक फॉलोअर्स वगैरह ये सब असाइड, बट तुम लोग का जो इम्पैक्ट है इस पूरे सीन पे, और तुम लोग जो बोलते हो, वी ऑल सुन लेते हैं और मान लेते हैं, बिकॉज हमको पता है यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेयर, यू नो. पूमा का पूरा साफ दिल के हैं, इसलिए अपने साथ कभी कभी उल्टा हो जाता है. बट मुझे बताओ, सो आई थिंक मैं अभी आजकल क्या होता है, जैसे काफ़ी नए ब्रांड्स भी हैं और काफ़ी बच्चे मिलते भी हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ ब्रांड शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा वो है, हम क्लास में साथ में पढ़ रहे थे, हम 4 जन एक साथ ब्रांड शुरू कर रहे हैं. what are your thoughts on like multiple partners in a brand, and तुम लोग ने कैसे सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि ये हमने कभी बात नहीं की है कि तुमने एक दूसरे को कैसे चूज किया, यू नो. उसके पीछे का क्या? you're saying read between the lines. Dude, लिख के आए थे हम. ऐसे क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें. बहुत मुश्किल से, like it's very it's a lot of things. मतलब बहुत साल हमने साथ में काम किया. Both of us are have worked at Puma multiple years together, and then outside of the country also, जब हम लोग notes exchange करते रहते थे और हम लोग same region के part थे, तो we would work together also. तो ये decision हमने साथ में work करने का बहुत साल के बाद लिया. Like अभी actually पता है, I'm very envious of Gen Z that they are able to take quick decisions. हम लोग को time लगा, you know, time लगा नौकरी छोड़ने में भी, time लगा कि तो पैशन जो हमारा है उसको प्रोफेशन में बदलते हैं. यार तुम्हारा नौकरी भी कौन से लेवल पे था ना, तुमको इट वाज अ वेरी वेल पेइंग जॉब.
इतना एक्सपीरियंस दिखा रहा है, अभी भी बहुत इतना खटकता है। इतना तुमको दुनिया दिखा रहा है वो जॉब, ऑब्वियसली उसको छोड़ के वो क्या उस टाइम का मेंटालिटी था कि वो छोड़ के हम अपना पूरा स्क्रैच, बिकॉज आई एम श्योर ये दिस मस्ट हैव फेल्ट लाइक तुम मतलब स्क्रैच से imagine शुरू ये कर रहे हो. इतना बढ़िया जॉब था, like I've always said I felt like I was born to work and do the job I was doing, but वो छोड़ के हम लोग ने ये चालू किया, we moved back to India, and how exciting that India story is for us. Yeah. You know, this decade and maybe even the next decade just belongs to India. और उसमें जो create करके build करने का मजा है ना, that is what is keeping that fire burning in our belly. Yeah. And it's happening, right? Like imagine, I think how many, this is your third store within 2 years? No. This is our second store within 3 months and third store within 2 years. Wow, second store within 3 months sounds like fucking Like insane. unbelievable, you know how मतलब sometimes like I sit back and I think कि मतलब अहमदाबाद भी खोल दिया. कोई strategy करते हो या? Strategy तो नहीं करते हैं. Like we were also, see we were bootstrapped and we are still bootstrapped. Like we raised a very small friends and family round last year, which also supported us in taking certain decisions that we were able to. But primarily we were bootstrapped. And उसमें टाइम लगता है, you know, जो कैश फ्लो आता है आपका बिजनेस से. And एक तो हम लोग मल्टी ब्रांड रिटेलिंग कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कंसाइनमेंट प्रोडक्ट आ रहा है और फिर उसको बेचे जा रहे हैं, लाइक. Right. तो वी हैव अबाउट 25 ब्रांड्स और मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में बहुत सारा कैश अटका रहता है. लाइक यू नो, कोई भी मल्टी ब्रांड आप किसी भी कैटेगरी में देखोगे तो आपका कैश उसमें है, वो कैश फ्लो से आप बिजनेस चला रहे हो. दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, राइट. As we started becoming PAT positive and हम लोग we became profitable is when we PAT is profit after tax. हाँ. Okay. So PAT is profit after tax. When we became positive in that aspect is when we gained confidence कि नहीं कर सकते हैं. You know, let's open one more store. And experience center इंडिया में अभी खोलना ज़रूरी था because online का जितना धमाल मचना था वो COVID post COVID मच गया, right? Now people want to go out and experience things. People are spending on tourism and food. So why not an experiential space even in fashion? Yeah. So that is what pushed us to open our Bandra Bombay store. And then we took the decision, which is along with doing you. really well. Yeah. And I really love the Bandra store. You know, when I came to the Bandra store, I think I've told this to Bhavisha also, is when I really realized कि जो मेरा भी Bandra store था, वहाँ पे अगर कोई भी any 15, 16, 18, 25 year old was coming in, they were feeling like I can also do this. You know, your Bandra store sort of reminds me of that. कि you know, the raw flooring and the makeshift of like how y'all have used wood and how y'all have used wires and this and that really taught me really like how a streetwear store should be. You know, we ended up doing all of this to show probably scale or bigger than what we are maybe. But पता नहीं उस वाले स्टोर में ना एक वो वाला स्टोर आपका बैंगलोर वाला स्टोर, bro, बैंगलोर वाला स्टोर also has that. We recently did a tattoo event there. I think we can talk about that also and what kind of vibe there was. 180 people tattooed, like never seen before. It's just Insane. Huh? insane. 2 days non-stop. Like, you know, to even have that space to even pull people, it's just. I think I ऐसा feel किसी blessed. I ऐसा feel blessed to be able to be a part of those kind of events, you know, honestly. Yeah, ऐसा I think overall worldwide किसी भी streetwear brand या किसी भी clothing brand ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा शायद, जो हमने मिलके उस point पे Shout out to Metal Inc. Yes, shout out to Metal Inc. Who the team was great. You know, they Phenomenal. really phenomenal, very supportive and very. I think all the tattoo events that you guys would have done, सब में जो जितने collaborators आए हैं उनका ही magic है, right? Like, ये ना एक मैराथन है, सही में बोल रहा हूँ. I think तुमने बोला जब था तुम्हारा कमर अकड़ गई थी ना तुम्हारी. मैं like, वही बोलने वाली थी, 4-5 it's days. back-breaking work, yeah. ऐसे ही मतलब you sit in one place. imagine, right? You're sitting like that. You're trying to do 200 odd fresh new designs for everybody according to their personality, and you're trying to make stencil clean drawings. Yeah. Right? For 2 days straight, non-stop for hours. Yeah. What happens to my mind and my body, I have never, you know, the first time ever that we did this tattoo event, on my way back when I was going home, I really felt like I should never say shit like this, but that day, because I had tattooed so many people, I felt like if today I die, I would be like, what a way to go. You know what I mean? Because I felt so accomplished, like more than any amount that I've hit my bank or anything that has happened.
that day, the kind of energy that we had, and I feel like यार इंडिया में ना वो spark है, you know, that, but what are we lacking? क्या है, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, because अभी तक क्या lacking in what sense? पॉपुलेशन इतना ज्यादा है ना कि जितने लोग सपोर्टर्स आएंगे उससे 10 गुना ज्यादा हेटर्स आएंगे. I think that is what it is. Like it's the huge population that we have, so we just have to keep in positive. नहीं, but also one thing to keep in mind also, I don't know if जितना supporters आएंगे उससे ज़्यादा haters आएंगे. I think it's more about the haters are sometimes louder than the supporters, but that doesn't necessarily mean that the haters are more in quantum. Yeah. They're just louder. So I have a question for you, Jay. So you know, when you do these tattoo events, like doing even 10 tattoos, 180 to दूर की, how do you get into that zone? Because you know, it's sometimes I feel, right, like I wake up and I feel like I've woken up on the wrong side of the bed, and I have my own way of putting that switch on, but I have to realize it. कभी time लगता है, right? Like I will listen to certain music frequencies and things like that to get in. What do you do to get into the zone? And you're like, you know, you, no matter what, these people have lined up for me. Yeah. I have to bring my A game and then some. How do you get into that zone? So I mean, they like when I, you know, I think there is a very different feeling the second I touch skin, and I just know that this is going to be on their body forever. So no matter how tired I am, it sort of hits me every time when somebody says, "Oh, we are doing our first tattoo ever with you," right? I mean, it's sometimes burdening. Holy shit, that's such a big responsibility on me. But it's also gratitude hits at the same time, nervousness hits at the same time, everything hits at the same time. But I feel like I've been drawing these images for so long that it brings me to that chair time with that one person, that everything comes and hits at the same time. You know what I mean? Yeah. So I mean, it's mad. It's mad. Like what happens at these events, it's crazy. अच्छा बता, do people come and ask you, as in like new age designers or kids, you know, do they come and ask you कि आपके स्टोर में हम अपना सामान डाल सकते हैं क्या? Like do people come? मुझे आज तक न्यू एज डिजाइनर्स ने तो नहीं पूछा है, बट काफी जैसे बेवरेज ब्रांड्स और ये वो, या मेरा परफ्यूम रख दो, या मेरे चश्मे रख दो, या मेरा ऐसे लोग काफी लोग पूछते हैं. How do you deal with that? यार मेरा कैसा है, मुझे ना ट्रांजैक्शनल चीज़ों से फिलहाल कुछ नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि हम जैसे यू नो, रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू दिस वन रैपर, and I was talking to him and he was telling me how like India में rap और fashion अभी तक collide नहीं हुआ है, merge नहीं हुआ है. And to that I had to literally tell him कि यार when y'all come in, you know, don't come in for a transaction. Don't come in कि तू मुझे कपड़े दे दे, मैं तेरे को shout out दे दूंगा और उसके बदले में हमारे रिलेशन बढ़ेंगे. नहीं, पहले रिलेशन बनाओ, कुछ साल बाद हम काम करेंगे, you know, तो वो तब जाके merge होगा. बहुत सही चीज़ है where people should forget कि ये लेन देन का मामला है. Correct. साथ में करो, बिना सोचे समझे करो, टाइम निकालो और एक दूसरे के साथ काम करो, एंड फॉरगेट कि तुमने मेरे लिए फोटोग्राफी की तो मेरे को क्या मिला, ये सब भूल जाओ. यू नो, लाइक दैट इज हाउ रिलेशनशिप्स आर मेड इवन इन बिजनेस. मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो कर दिया तो अब तुम मुझे 10 टी-शर्ट दोगे, या फिर मैं तुम्हारे यहाँ कॉफी ला के दे रहा हूँ तो कल से 10% डिस्काउंट पक्का है Jaywalking का या कैप्सूल में. If I have brought 5 friends of mine, तो कल से तो मेरे को 25% off मिलना चाहिए. Yeah. Like forget that. Yeah. Relationship is not transactional. You know how we have a relationship, for example, I've come to you guys for help. Yeah. And how same, like हमें कुछ जरूरत थी, gave a call to you, Jay, like this is what it is. Yeah. And then you came forth. So yeah. I love how we have this little you know, I have so many people at my, like I can literally pick up the call without WhatsApping you you know, can I call you right now, are you free? No, I call you guys, right, directly. If it being you, any other brand, Supercake, Sangeet, I can call anybody, right? And I think that is only that built. Doesn't mean that anyone can call us. No. I was just going to say that has only happened because we built, and we never had this transactional relationship. And that is why today we are all helping each other, is what I was just going to say. You were going to say something. I was just going to say, that's such an interesting point, right? Like to think of it today, how many people, like that's a measure of genuine relationships you have. How many people you can like literally just pick up the phone and call without having to drop a message. That's legit a way of knowing ki kitne log, like how many are your people. Yeah. No, but ये scene तो I think
ये बढ़ना चाहिए, right? Like this is what camaraderie is. This is how the streetwear lifestyle fashion scene in India will grow. Like ये ज़्यादा होना चाहिए. Like people need to work together. And तुमने जो ये rap वाली बात उठाई ना, I was having this conversation, I'm forgetting with whom recently, कि India में streetwear and music collaborations have not happened in the right way. Not at all. Not at all. Like, you know, such great brands are available globally. Who was the photographer who's no more? I'm forgetting the name. Chimoru, he passed away a couple of years back. Amazing, legendary photographer. Had great photo portraits of a lot of rappers, and he started his own brand. And we stalked him as well. So Chimoru was a label that we had started stalking. We did 2 drops, and then he passed away, and that whole license, faded away. But what great collection of products with those portraits on t-shirts and sweatshirts. And it was very just simple, right? Very like simple. It was just great work, but on a good quality canvas, and had so much storytelling behind it. And when that brand happened, both of us were talking that how can we do something like this in India? How do you think? Like, I mean, recently we were talking about how we should build our own IP. So y'all, I mean, fuck, how did we not talk about Word on the Street, man? Oh, yeah. How the hell did we not talk about Word on the Street? Word on the Street was the most, like, I did my first ever pop-up with... First three pop-ups with them, right? I was a guy, I was 10 days old, 10 to 20 days old when my first ever pop-up happened in Bangalore. I have never been to Bangalore. I have not made enough money yet to even buy a ticket to Bangalore. And I come and meet you guys. And so why I stand by you is because I know you guys are really doing it for the culture, right? Y'all are really trying to push y'all are really trying to do your best to push the culture. Like, look where I am at today, for example, is also because of you guys, right? Because y'all showed me कि आओ बैंगलोर में भी एक दुनिया है, वो भी एक शहर है जहाँ पे कूल लोग हैं, वहाँ पे भी पार्टियाँ हो रही है. मैं शायद कभी बैंगलोर, मुझे वो पर्सपेक्टिव ही नहीं मिलता कि ऐसे लोग हैं और ऐसे इसको पॉपअप बोलते हैं. बिकॉज मेरे दिमाग में क्लोथिंग एग्जीबिशन वॉज द वर्ड, राइट? पॉपअप मुझे पता ही चला तुमसे, और आज लोग पॉपअप करते हैं. बट आई थिंक that time when things were simple, like Vedant was there with his 5-6 t-shirts, I was there with a small suitcase. We were both probably on the same flight to Bangalore. Like, look where we were just like a couple of years ago. We were just as normal kids as how other kids come to us and be like, hey, how do I start a streetwear brand, right? So I think both of us, like, and in this matter, I would say Bhavisha has a much bigger vision than I have. So basically, like, every day we get at least 10 emails or requests that, hey, how can I come on your platform? How can Capsule, enlist us as one of the brands? So what is your criteria? Simple criterias. We started an international language ka, international tone of voice ka concept store. That is what our vision is for Capsule. The international brands that we have, wo to hain, and we'll continue growing that. But in the homegrown section, as Bhavisha said, we are waiting for good brands to start. Like, we have about 6 brands right now. हमारा criteria है कि brands need to match the tone of voice and the language that we are curating. That is A. Second is that we see continuity in the brands. And I was just going to say that, yeah. Based on our experience, we are able to tell in the first go itself कि ये brand रहेगा या नहीं रहेगा. We at least ये हमारा experience है. थोड़ा मेरे लिए तो थोड़ा अनोइंग है कि हमारे पास हर टाइप का रिसोर्स है, हर टाइप का एक्सपोजर है एट दिस मोमेंट. People are open to collaborate. Good looking people are open to offer their bodies to get you to shoot them for free in exchange for a simple shout out or good pictures also. I think everything is at our disposal. I think that I am a little annoyed because I also want to be a part of some brands or बीच में I was talking to you, right, कि तुम्हारे नज़र में कोई brand आया है because I desperately want to invest in brands. I want to create this big umbrella of Jaywalking brands. I know थोड़ा long shot है but कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना. Vision है ना जे. Vision है. मतलब that's the मुझे starting gang point. बनाने का है, एक proper gang बनाने का है. What do you think? Like, how do I? 100%, right? Like, मतलब it's a very, very, very exciting time. We've come back to India for this. This is just the start. Meenakshi also keeps talking about how, मतलब आज के दिन में if you think about ethnic wear, गली में छोटा brands है, they'll have their own unique way, or you'll get good product. अभी वो casual way में आने वाला है.
streetwear is one part of it, right? Yeah, Like today, I think as long as someone knows कि मेरे को बस ये copy नहीं करना है, right? One way to be on Capsule is to have your own unique voice and flavor that you want to bring and unique storytelling. If you had to brainstorm about like how kids can be unique, what do you think? Because see, of course, we feel like everything has been done. They say everything has been done. Every graphic has been. How do we? So even if like somebody comes to you and of course we all say that try to be unique, try to be different. How do they try to be different? Like what is your baseline advice on that? Advice kya hai? Like we are actually looking for unique stories. I feel that this is what we keep on talking कि सिर्फ टी-शर्ट पे कोई भी ग्राफिक नहीं छापो, like that is not like Pinterest से लेके कोई ऐसे ग्राफिक मत छाप दो, like you need to have your own vision, perspective. वो क्या है? What is the story that you're trying to tell? T-shirt is going to be a T-shirt, but how do you make it different? Like why should I wear that? Like look at what like just go to endclothing.com for example. Just look at the roster of brands that they have and check out how every brand is different from the other. Yeah. Like वहाँ पे ही 500 brands हैं और सारे 500 brands एक दूसरे से अलग हैं. और उन्होंने communities और tribes कैसे बनाए हैं? Just at least refer to what where the things started, right? इंडिया में अपना अलग सीन बन जाएगा. ऐसा नहीं है कि कोई चीज रेफर करके या कहीं से लेनी. Correct. But एक होता है ना कि you go to a certain school to do the basic studying. वो चीज तो करनी पड़ेगी. Slightly unpopular opinion, it's not that everybody also must start a brand, but you can be part of the whole movement and be part of the whole industry, right? There are so many different ways. There's content creation, there is photography, there's just the business of it, there's merchandising, there is even logistics, supply chain, there are so many different things. Yeah, I think people don't understand that there is a huge career that you build in those things also. Like you can be so critical to the success. Each of these is a link in the entire fashion chain, right? Each is so important. And so many people have a lot of money, right? Yeah. And they want to start stores like Capsule or they want to start brands like Jaywalking. Yeah. And they'll probably start also, right? Like they will put in money into manufacturing or certain range of design and they'll just start. But वो चलेगा भी नहीं, वो that brand also dies in the first 6 months. ऐसा भी बहुत बार हुआ है. But they should rather invest in brands who have like put out their work for 2-3 years and then be part of the scene. यार और फॉर दैट मैटर मतलब रिटेल स्पेसेस ले लो. हम लोग जब पेरिस गए थे फॉर पेरिस फैशन वीक, मतलब लॉट्स ऑफ दीज ब्रांड्स हैड स्टार्टेड डूइंग पॉपअप्स. ऑब्वियसली दे कांट बी पार्ट ऑफ पेरिस फैशन वीक, बट that's a great time to showcase your brand, right? Because buyers and all from all over the world are there. Now someone is starting a brand, someone has started a business of pop-up rental spaces. Exactly. You're part of the whole scene. Yeah, you're part of the scene. No, ये मेरे साथ बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ हुई थी. मैं जब लंदन कॉलेज ऑफ फैशन पढ़ने गया था तभी तो मुझे ब्रांड्स का नाम भी लेना ढंग से आता नहीं था. और क्या पढ़ने गया है? फैशन, राइट? अपन तो ऐसे ही बोलेंगे फैशन पढ़ने गया है. मेरे को वहाँ पे मेरे एक ट्यूटर ने ही पूछ लिया कि ओ सो व्हाट आर यू स्टडीइंग? आई सेड फैशन. व्हाट डू यू मीन फैशन? फैशन, लाइक नो, फैशन इज़ अ वेरी ह्यूज. और मेरे को तो सही में उतना लंबा ये भी नहीं था. दे लाइक व्हाट फैशन इलस्ट्रेशन, फैशन दिस, लॉन्जरे, फुटवेयर, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओ शिट, देयर इज अ लॉट. बिकॉज बच्चे आके या तो कमेंट या तो मुंह पे बोल देते हैं कि तुम्हारा स्पेस सैचुरेट हो गया है, यू नो व्हाट आई मीन. एंड उस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि हाउ सैचुरेशन को कोई मतलब नहीं है. अभी जैसे अभी तो कुछ किया ही नहीं है, राइट? हाँ, मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन इन द कंट्री हैज टू हैपन. अभी तो Alcobev brands have a lot of money which they are putting in marketing and content sake के लिए they do keep doing these collaborations with various brands. But one point that I just want to put forward to all these new age or like the new brands that are coming up, you just don't do any collaboration for pittance amount, Yeah. Every make your basically build your work. Every brand will pay you good amount of money for great product that you put out. Yeah. So ये जल्दी का काम कुछ भी नहीं है. Like what do you say, Bhavisha? Overnight success doesn't happen overnight. Yeah, overnight, it takes 7 years. It takes 7-8 years to achieve overnight success. Yeah. No, so tell me like what happens when I'm sure when you all left your jobs and you all started Capsule, I'm sure it must have taken some time to like at least come up, right? Start standing up and all of that. And बहुत नहीं, हमारे पास time नहीं था. We didn't have financial backup. हाँ. Like हम लोग
we saved some money. हमने हाँ. 5-5 लाख अपना कंपनी स्टार्ट करने में डाला, हाँ. and we didn't have financial backup. We saved some money कि अच्छा 6 months तक कोई काम नहीं मिला तो क्या करेंगे, वो हमने अपने पैसे सैलरी से सेव किया था, ठीक है. But then immediately after coming back to the country, we started doing brand consultancy work because we had to pitch also to international brands कि India is not only a snake charmers country, but हम लोग को मतलब हमारे यहाँ भी कूल कल्चर है, क्रिएट कल्चर मेकर्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे. बहुत कुछ हो रहा था इंडिया में. we took the time, we platformed a lot of creatives all across India, length and breadth of the country, in a very B2B way of sorts, right? Because उनका like we made a whole video, like a India culture story का video जो आज भी YouTube पे है by Capsul Collective. I'm gonna check that out. But यार कभी तो सी जैसे मेरा एक फेज आया था. रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू गाइस कि यार मेरे को अब ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिमाग बर्न आउट हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट वांट टू रेफरेंस इंटरनेशनल ब्रांड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि यार अपने यहाँ का पूरा स्टोरी, प्लेटफॉर्म, कस्टमर का मैच्योरिटी से लेके सब कुछ बहुत अलग है. हम लोग भी इंटरनेशनल ब्रांड्स बेचते हैं बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. हम लोग कुछ भी वैसा नहीं करते जो ग्लोबल ब्रांड्स करते होंगे. लाइक हमारा तरीका अलग है, राइट? लाइक also by virtue हम लोगों ने क्या किया, we come from Puma, right? And we've partnered with a lot of platforms like Capsule, stores like Capsule, right? In those other markets. Honestly, मेरे को लगा this would be much easier than what it actually turned out to be. Yeah. I did not think it would be such a challenging road. अच्छा, सबसे पहले तो just to spread more information about streetwear. हम लोग जब स्टार्ट किए 2018 से, फर्स्ट पॉपअप हमने किया था एजी स्ट्रीट 2018 मार्च दिल्ली में. एजी स्ट्रीट जब हुआ था तो उसके बाद से हमने कहा कि यार बैठे बैठे कुछ काम नहीं होने वाला. ऐसा नहीं है कि टुमारो यू ओपन अ स्टोर एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन एंड शॉपिंग. वो आज भी नहीं होता, राइट? अहमदाबाद में भी स्टोर खोला. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. करेक्ट. तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो वी स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ वर्ड ऑन द स्ट्रीट पॉपअप्स. दैट इज व्हाट यू मेंशनड अबाउट. And दोनों हमने every word on the street, we did what, 23 editions? Yeah, we've done about 23 of word on the street. 23 editions, and we put in अपने जेब से 50,000 minimum per pop-up हमारा जाता था. We never charged any brand because you all didn't charge me also. That was our contribution to sort of creating the culture and like spreading the information and just like spreading the love for streetwear. Do you think we can bring it back ever? We would love to. क्यों नहीं करेंगे? Like हम we know how to bring it back, we know how to build it up. कितने अभी बहुत स्पेस है. अभी देखो ना, AYCS हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, राइट? और भी रैंडम बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. बट अपने इवेंट्स का एक खासियत ये है ना कि हम ब्रांड्स को रहने देते हैं जैसा वो है, राइट? when I came to Bangalore, you all didn't push me to do any production. तुमने ये नहीं बोला कि बोर्ड लगाओ या एक पूरा महल बनाओ वहाँ पे और ब्लू कलर के अपने समझ रही मैं क्या बोल रहा हूँ. बट जो भी प्रोडक्शन हुआ था, सो दैट इज आवर फिलॉसफी. क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हुआ था वो हम लोग डालते थे बिकॉज एक लैंग्वेज क्रिएट कर दिया वर्ड ऑन द स्ट्रीट का. उसके अंदर सारे ब्रांड्स जितना अपने उस समय की हैसियत से कर पा रहे हैं करेंगे. उसके बाद तो तुम जब ग्रो करो तो तुम बिग लेडी को भी जाके रख दो अपने पॉपअप में. करेक्ट. पीपल विल एक्सपेक्ट वंस यू स्टार्ट डूइंग लार्जर प्रोडक्शन, पीपल विल एक्सपेक्ट कि तुम एवरी पॉपअप हैज टू बी लाइक ग्रैंड. तो वो कल्चर अलग है. बट ये सो आई मीन ये जो मल्टी ब्रांड का पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने यहाँ पे वैसे अवेयरनेस तो काफ़ी हो गया है, राइट? अब जो बड़े जैसे जैकमू है या रिक ओवंस है या ऐसे ब्रांड्स को कोई कैसे ला सकता है यहाँ पे? लाइक तो आई एम श्योर तुम लोगों ने अपना काफ़ी लेगवर्क किया होगा कि स्टूसी और कारहार्ट और इन लोगों के साथ तुम्हारा पर्सनल रिलेशंस है या लाइक हाउ डज वन गो एंड गेट इट? लाइक आई थिंक द बिग ब्रांड्स आर आल्सो सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड कमिंग. लास्ट ईयर एट अजियो लक्स वीकेंड, उसमें वी सॉ लाइक वन रैक विद ACW एंड स्टफ, a cold wall. So matlab in their own way I think the bigger ones will bring it because it's not easy to bring the big brands into the country. There is a certain there's a certain sort of retail environment that they will only want to be present in. Do you think ये सारे ब्रांड्स आने के बाद अपने कंज्यूमर्स को भी पता चलेगा कि रियल लाइक कुछ फर्क है क्या? What do you think? Is there a difference? Like I'm sure you've touched my product, you've touched international brands, you've touched Thrasher and you've touched world products. Do you think अभी हम कहीं ना कहीं तैयार है नहीं है?
और वो तैयार होने का वो जो शायद चलो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे में वो एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू लंदन मेरे को ऐसा लगा कि लग्जरी ब्रांड्स लग्जरी क्यों है, यू नो, आई वाज नोटिसिंग स्मॉल थिंग्स. वो बंदा सूट में वेल ग्रूम्ड, स्मेलिंग गुड, टॉल, यहाँ पे वॉकी लगा हुआ है, पूरे फ्लोर पे कारपेट लगा हुआ है, यू नो, चेन के ऊपर. अभी जैसे we can almost reach the finishing of say a Louis Vuitton jacket, for example, hypothetically, but still what is setting them apart, right? Still, what do you think, Jay? Like you know, you have, like, Jaywalking has been there and it's been like the amongst the top brands in the country. You have traveled the world also with that nazariya. So do you have an answer to this? that's what I'm saying. Like मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं जब सोल टेक्स भी गया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उधर मेरे को एकदम अंदर से वो हो गया कि भाई हम तो तैयार है. हम तो बिल्कुल तैयार है. मेरे को भी लग रहा है हम लोग तैयार है. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग तो बिल्कुल तैयार है यार. कौन सा ऐसा प्रिंट मेथड है जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, या कौन सा ऐसा फैब्रिक है जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि हम तैयार हैं. देन आई वुड से गो टू अ सेल्फ्रिजेस एंड ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है तुम गुची में जाओ या इधर उधर जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास ऐसी फैक्ट्रीज के दरवाजे खुले हैं जो हमको खड़े भी नहीं रखेंगे, आते 10 साल तक शायद नहीं खड़े रखेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक छोटा सा ट्वीक होता है ना, जैसे अगेन आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ रैपर कि समझ तुझे लग रहा है कि तूने गाना बहुत धमाल बना दिया है. कभी कभी ना लोग कम स्पेंड करके अच्छा वीडियो नहीं बना के अपने आप को so I think that कम spending for us would be say buying a Riri zipper, stepping up, YK के छोड़ो Riri पे चले जाओ, या स्टोर पे एक्चुअल किसी एक्स लुई विटो एम्प्लॉय को हायर करो. यू नो, आई थिंक मैं वहाँ पे थोड़ा हम लोग हिचकाते हैं कि 2 लाख रुपया महीना कौन देगा भाई, ये बंदा काम भी नहीं करता. यू नो, सो आई थिंक मे बी, यू नो, शायद यहाँ पे वैसे प्रोसेसेस लेके आए और यहाँ पे वही टाइप का म्यूजिक बजाएं, वही टाइप के, क्या पता थोड़े और प्रोडक्ट्स अपने ऐड हो जाएंगे, परफ्यूम आ जाएगा, कैप, बूब, शूज, सॉक्स, वो मजा बेल्ट. चला जाएगा. वो जो स्ट्रीट वेयर और यंग ब्रांड्स का जो DIY वो टेक्सचर जो है ना, हाँ, वो लॉस्ट हो जाएगा. तो Like, फिर why तो हम रेडी हैं, फिर तो हम बिल्कुल रेडी हैं. बिल्कुल रेडी हो. It's just a But matter of brand, as a brand ready हो, but is the country ready to welcome such concepts like कर ही रहे हैं ना हम लोग, सब तो कर ही रहे हैं in our own way. And I feel like, you know, a great brand that's doing this and that's done it so sort of subliminally is Carhartt, WIP, right? Yeah. Carhartt is like the new luxury. Yeah. Carhartt के stores देखो, they give you that same feeling. ये मतलब I can also do this, but it's Yeah. taken them time. We have to, मतलब जो time डालना है, the 7 to 8 years for overnight success, वो there is no sort of, there's no flash in the pan. You know, recently I had a very in-depth conversation with Abhishek Patni from Not One. And I don't know, something just hit me and I told him, bro, either you will make it now, अब तेरा टाइम तो आ ही गया है, बट 10 साल में तो अगर तू और 10 साल का पेशेंस रखेगा, तब तो आँख बंद करके तुझे you will make it for sure. You know what happened? Like, I think staying in the game and marinating yourself for a long time, what happens is, मैं जब you asked me, right, कि मैं बाहर कितना घूमा हूँ, मैं घूमा, मैं सब कुछ देखा. I decided I will spend the money on whatever I really like. Okay? So this is going to be a cycle where people are going to go abroad. हम तो बाहर से क्यों नहीं ले ले, हम ये क्यों नहीं कर ले, हम वो क्यों नहीं कर ले. वो घूम फिर के ना at one point they are going to be like, 10 साल से भैंचो दिए यहीं पे वो कर रहा था, वो दिन आएगा अपना. ठीक है यार, हम इतना, यू नो, तू पिछले वाले पॉडकास्ट में बोल रही थी कि हम वो कित क्यों नहीं बन सकते. उसका टाइम आएगा. आई थिंक ऑल वी हैव टू डू इज wait for a while. It's not just about waiting, it's about consistently showing up and doing what you have to do, because your chance of success increases exponentially the longer you stay in the game and the more you consistently give yourself to You it. know, I and think every other kid right now thinks that they can become another Jaywalking or another Blue Orange, for example, you know, like सारे brands को इतना quick success नहीं मिलता है, you know, like these guys have nobody obviously no one has obviously seen sleepless nights that they have probably gone through. And also like बहुत बार luck भी matter करता है, बहुत बार सही timing matter कर जाता है, right?
सही decision during like on the right time. But सबके साथ ऐसा नहीं होता है. So just have that patience, right? Like that's what we are trying to. But you know how many people even know Jaywalking, the overnight success, the 7 to 8 years behind that, Jay? How many people even know that story, right? Yeah. Like because of the family business and everything, you've had that understanding of fabric. Correct. Now you are blessed with an artistic, like an aesthetic, with understanding color palette that is pleasing. Now that is your God, like that's a gift given to you. Yeah. But the amount of pata hona to be able to even seize an opportunity, something which has become instinctive, has come about because you have been in a certain environment, and you all like, why don't you share a little bit of your 7 to 8 years? No, मुझे ऐसा लगता है ना कि I think जैसे हम लकी हैं कि हमने यहाँ पे स्टोर खोला? नहीं ना, हम आए ना यहाँ पे, हमने अपॉर्चुनिटी देखी और हमने उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लिया. हमने एक्शन लिया तब हम और लकी होंगे आगे जाके. यू नो, क्लियरली मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं मेरी लाइफ में कि इट शेक्स यू, अंदर गट क्या है वो फील होता है. यू नो, my friend Shailja actually said, right, she's like, no dream is an actual big dream unless it keeps you awake for so many nights. Like I was like, when I heard her say that, because I was telling her shit yaar, you know, abhi Bombay karna hai, because Bombay was becoming a nightmare. We were not prepared कि Bombay store खोलने के लिए कितना bureaucratic layers को cross करना पड़ता है. And you know, you have certain budgets in mind, वो खत्म हो जाता है. Then how do you bring more funds in? And then what do you do, right? And then Ahmedabad conversation happened, and you know, we were like, karna to hai, let's do it. Yeah. But we were like, both of us, we were not sleeping for quite a few nights because tension tha. And when she said that, we were like, oh shit. I've woken up, you know, I've woken up in the middle of the night with my heart thumping. Yeah. No amount of like MBA planning or whatever I've studied can prepare you to khada karo fire store. करेक्ट. अरे यार, Nothing. खड़ा करो भाई. मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने अभी इन माई हेड नो आई हैव रियली डिसाइडेड ऑफ like what I will have to do, because recently, speaking of Blue Orange also did call me, right? And we had a very open conversation about, bro, like what's going on, like what's going on in the market, like you know, what are we doing, like how do we plan to like get that another jump? I don't know if people know, but me and Blue Orange talk about everything, right? And I have that rapport with everybody overall. I break bread with everybody, right? So I know, because I am very much at the center of it. तो मेरे को पता नहीं, I don't know तुम लोगों को क्या लगता है, but मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे को अभी मुझे longevity चाहिए. मुझे चाहिए कि मैं अपनी जगह reclaim करके in a much stronger way. I want to stay here for a long time. You know, that's why, for example, website, ये वो. I'm also really trying to figure out like अब future क्या है. What do you think is the future? Like what's going to stay? Is there going to be a correction? काफी सारे ये 2999 वाले brands चले जाएंगे. कभी नहीं, right? Like we are such a अभी vast population. You know, Bloom Ventures करके एक VC firm है. They came out with a beautiful paper that, you know, that sort of sections India into multiple different multiple different categories. Now there's one India Alpha, which is I think the size of some 7 million people or 17 million people or some such size of, like for example Poland. Then there is an India A, which is some 100 million people. And then there is an India B, which is some 500 million people. Please don't quote me on the numbers. My numbers may be wrong, but you get the drift, right? Yeah. And with every passing few years, people are moving up. So there are going to be brands catering to everybody. One needs to understand which India they want to cater to. So True 999 ka ek brand will cater to a certain India. And it's okay, right? Like you got to know what you want. Like for me personally, why do I want to be successful and build is I want the freedom of choice. Ki aaj ke din, for me, what success signifies is kal ke din mere ko agar kuch kharidna hai, I have the money. Tomorrow, kal ke din mere ko kahin jana hai, time and resources are not a reason for me to not be able to go, right? If I'm able to do that, for me that's success. It's not what, like for me, and that's my own definition. And I guess everybody needs to have their own definition of it. So every brand, there is a place for saying कि किसी को 10 घर खरीद लो, मेरे पास 10 घर है, 10 गाड़ियां हैं, तो वो सक्सेस. If that is for them, correct. Everyone, right? Correct. Like सबका अलग लगे.
मतलब किसी को चाहिए हो कि नहीं, मेरे को नेक्स्ट 6 months में रोलेक्स चाहिए. हाँ, and you work towards that. Yeah, but correct. and you can work towards that and achieve that by making a probably like a 799 rupees ka t-shirt, Yeah. or you can do it by doing a 5,000 rupees ka t-shirt. Yeah. Right? Give it enough time. Yeah, I think we every time this conversation of streetwear comes up, no, thoda sa it annoys me that it is only revolving around t-shirts a lot in our country. मेरे को बहुत बॉदर करता है क्योंकि मेरे को भी ना एक कैटेगरी में डाल दिया है ऑनेस्टली यार. एक्चुअली कितने लोग हमारे स्टोर पे आके बोले हैं कि ओ शिट इतने सारे ये भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, हमको तो पता ही नहीं था, यू नो. तो स्ट्रीटवेयर तो ऐसे भी बहुत इंटिमिडेटिंग टर्म हो गया है फॉर अ लार्जर ऑडियंस. तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि स्ट्रीटवेयर इज नॉट जस्ट टी शर्ट्स, इट्स अ लाइफस्टाइल. इट्स एन इमोशन, इट्स अ वैल्यू. ठीक है, आप स्टोर किसी भी स्ट्रीटवेयर स्टोर में आज के दिन में जाओगे, किसी भी ग्लोबल स्टोर में आपको सब कुछ मिलेगा. इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द रीजन दैट यू आर इन, द ब्रांड्स व्हिच सॉर्ट ऑफ लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा दैट दे आर केटरिंग टू, राइट, एंड व्हाट वैल्यूज डू दे वांट पीपल टू एसोसिएट विद. ये सब पे लाइक सब कुछ प्रोडक्ट्स उसी पे बनता है. लाइक जेवॉकिंग के यहाँ टी-शर्ट्स, हुडीज, ड्रेसेस, सब कुछ है, राइट. यू आर वेंचरिंग इनटू परफ्यूम्स आल्सो. yes, You're venturing into perfumes. I'm You do so trying. many things. You're trying. Okay. It's also about, like, to your point, Meenakshi, it's also not just about these products. It's also about objects, right? It's about a unique perspective. And I'll give you one sort of case in point. Biscuit, Space Biscuit from Chennai. Like, they have this one product which has my heart. हम लोग जब पूजा एंड ऑल करते हैं, like we have अगरबत्ती. Sometimes when you don't have an अगरबत्ती stand, what do? You put it in a kela. yeah, They've made a ceramic incense holder which is in the shape of which is a kela. Which is so cool, right? It's about that perspective. yeah, To me, streetwear is clever. yeah, it's very freeing. It's very like मेरे को भी जब भी पूछते हैं ना, I really feel like यार ये स्पेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, you know, in terms of Exactly. like कुछ भी. like अगर मेरे को आज मन हो रहा है मेरे स्टोर पे क्लासिकल भरतनाट्यम टाइप का म्यूजिक बजेगा तो मुझे हाँ बजेगा. ये लुई विटॉन के स्टोर में नहीं बज सकता, यू नो व्हाट आई मीन. ये हमारे स्टोर पे बज सकता है. एंड वन थिंग वेरी ब्यूटिफुली दैट आई थिंक वर्जिल और समबडी हैड सेड दैट स्ट्रीटवेयर में वी हैव नेवर प्रॉमिस्ड क्वालिटी. हमने सामने से कभी प्रॉमिस नहीं किया कि हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है इसीलिए हमारा बट ये बताओ ना कि क्वालिटी क्यों नहीं अच्छा है. क्योंकि क्या होता है कि आज के दिन में एज अ स्ट्रीटवेयर ब्रांड तुम्हारे रात में तुमको कोई आइडिया आया, यू आर एन आर्टिस्ट, नींद में आइडिया आया और तुमको खुजली रहेगी कि मेरे को कल की कल लॉन्च करना है, तो तुम क्या करोगे? जो सबसे नज़दीक अवेलेबल है स्क्रीन प्रिंट वाले को पकड़ोगे और बोलोगे बॉस आई वांट टू पुट दिस प्रोडक्ट आउट, यू हैव टू हेल्प मी विद इन 3 days. अभी क्या हुआ था, आज हम लोग का कुछ किसी आने वाले इवेंट के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, राइट. 10 दिन उस इवेंट में और भविष्य मेरे को बोल रही है यू हैव टू मेक इट हैपन. तो 10 दिन में अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो वो कोई आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी नहीं ला पाओगे. बट तुझे ऐसा लगता है किसी को क्वालिटी पता भी चलती है? यार पता चलती है कि नहीं चलती है, लाइक आई डोंट नो. आज के दिन में यू नो एवरीवनस टॉकिंग अबाउट GSM, राइट. और दूसरा है कि just because something doesn't feel a certain way does not necessarily mean it's bad quality, right? Correct, like correct. Pleasures t-shirts. Now Pleasures, Jaywalking ने बर्बाद किया सबको मोटा टी-शर्ट पहन That's true. Blue Orange को भी थोड़ा ये दे देते हैं. 180 GSM पूरी दुनिया को पता नहीं कहाँ से 220 से स्टार्ट किया था, 320 पहुंचाया. अब तो lot of brands, our friends also have started their own brands with 400 GSM. भाई इंडिया है बॉस. नहीं यार मैं खुद अब फ्राई हो गया हूँ इतना ज़्यादा टी शर्ट पहन के. नहीं बट यू नो मेरे को ये भी कब हिट हुआ कि अगेन टॉकिंग अबाउट रिक ओवंस, आई वेंट टू रिक ओवंस का स्टोर, राइट. अभी वहाँ पे कुछ 600-800 पाउंड का टी शर्ट था कुछ, मेरे हिसाब से मैं बोलूँ 90 GSM का नहीं होगा शायद, 90 GSM का भी नहीं होगा. ऐसा था कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है. ऐसा है कि मतलब यू नो लाइक गंजी. हाँ मतलब अगर वही अपने रैक पे पड़ा होता ना, पोछा बन जाता है भाई एक बार धोने पे. ये तो कचरा क्वालिटी है, यू नो. अब उनको ये नहीं पता ना कि वो उनको ऐसा लगता है हायर GSM गुड क्वालिटी, लोअर GSM गू क्वालिटी. बट हम बेसिकली मम्मियाँ हमारे यहाँ कल्प्रिट है ना. मम्मी बोलेंगी ये क्या टी शर्ट रख लाए हो, धोने में खराब हो जाएगा. दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड. बट आई थिंक स्ट्रीटवेयर में क्या है कि जो अब बना रहे हैं और जो खरीद रहे हैं थोड़ा इंडिपेंडेंस है उनको भी. किड्स आर बाइंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस. तो पेरेंट्स भी थोड़ा फ्रीडम दे दिए हैं कि हाँ खरीद लो व्हाट यू फील लाइक. तो किड्स आर बाइंग. अब उनको जो समझ में आएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, दे आर बाइंग.
डांट भी सुन लेते हैं आजकल बच्चे की. Mummy will say, why are you buying so many blacks? Your whole wardrobe is black, but kids will still buy blacks, right? तो चलता है अभी. I think culture का part है. We're also seeing kids converting their parents into wearing streetwear, huh? That's very interesting. That's super interesting. We love that. Capsule में तो बड़ा मजा आता है when the full family comes and shops and like everybody is in fresh fit. Like we love that feeling. यार अब I am dying for people to start having individual styles, you know. अब वो time है यार. I think one brand that does it very 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 in a very cool way is Not Black Not White. I think they have a very strong very distinctive identity. And वैसे और कोई brand नहीं है जिसने इंडिया को बहुत cool दिखाया है. You know, I think there is, for example, Bhavya Ramesh is another brand which has 4-5 नेम है. तुम्हारा नाम Jaywalking आता है, भव्या रमेश है, Not Black Not White है, Almost Gods है. I would say that they have also created this. मतलब कौन सोच सकता था कि वो जो टोनैलिटी और जो ग्राफिक्स वो यूज कर रहा है विद द नेम, वो इंडिया में पहन के प्राउडली लोग घूमेंगे, राइट? बट इट्स अबाउट द कल्चर एंड द राइट वे ऑफ creating a brand that Dhruv has taken up to. That is oh yeah, 100%. What I mean, why I was naming, I know there are many other brands also. Why I was naming, say for example, a Bhavya Ramesh and a Not Black Not White is they've made India look cool in terms of Indian aesthetics, right? How they have the chatai and everything. You look at any corner of their store, right? You can know it's a Not Black Not White store, for example, right? Any corner, right? They have these plastic flowers and I remember हम लोग जब Soul DXP गए थे, No Black No White had done a pop-up at Soul DXP, right, at that time. And you know, typically how you sajao your house with those marigold flowers and stuff like that, they done all of that. There was one. तुम्हारा भविष्य मस्त सजाओ your house, खड़ा कर दो फाइल. I love these terminology. चलो. अरे हम बम्बई के हैं. नहीं तो हाँ, I mean I think मेरे को वो सब देख के definitely ऐसा लगता है कि possible तो है इंडिया को cool बनाना. On a, you know, to teach them and how Karu research, cool, by the way. Yeah, Karu research. But also not just making India cool, right? Like, I mean, yes, making India cool, but I've also seen at a macro level, you know, the world and the powers that be look at different cultures. So once upon a time, it was, you know, post-Soviet Gosha Rubchinsky. Soviet cool. Then I remember it became Mexican. And I'm also seeing that at a global level, right? Like, and Indians all over the world are also everyone's together making India cool, right? Whether it's actors, whether it's stand-up guys, whether it's brands, Priya Aluwalia, Supriya Lele, you know, Masaba. All of these people, all of us are doing that part, and I think that entire collective consciousness is, you know, we need to capitalize on it, right? Like it's a great time once again to say that to be associated with anything India. I sometimes get very offended कि साला अब तो मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ तो अभी भी कोई approach क्यों नहीं करता, मतलब to sort of have a conversation or understand what we are doing और कहाँ ले जाना है और हम कैसे करें. With longer vision, like अभी तो बहुत short term vision के साथ marketing gimmicks के लिए लोग approach करते हैं. अभी ये podcast जब आएगा ना तब आएगा क्या पता, देखेंगे. नहीं, I think but short term gimmicks के आगे अगर brands और जो marketeers हैं, brand marketeers हैं, वो सोचने लगे तो this will be great for the brands and the collaborators both. You know, like both sides have to benefit good out of it. And I think vision ये रहना चाहिए कि good product needs to come out of it. Yeah. कि oh shit, I need to get my hands on this damn product. You know? मुझे तो अभी बहुत मन है कि मैं थोड़ा टाइम हाइबरनेशन में जाके अलग कंट्रीज के भी फैक्ट्रीज एक्सप्लोर करके कुछ मेरी तो बहुत इच्छा है. Would you ever open a store in another country? So last year I did my research. Okay, last year I went to Dubai, I went to UK. मुझे फ़र्क ये लगा कि दुबई इज़ डेफिनेटली अ वेरी लोगोसेंट्रिक मार्केट जहाँ पे लोगों को ब्रांड पहनना है, सिर्फ ब्रांड, उनको कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या हो. तो वहाँ तो मैं शायद नहीं चलूँगा फ़िलहाल क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं दुबई ठीक है. बट इंडियंस ना, अभी हम वहाँ लाइक हाउ डू वी टैप ऑन टू द लोकल्स एंड कन्विंस देम कि तुम मेरा 4000 का टी शर्ट बाय करो और बाकी कुछ बाय मत करो. तो अभी वो मेरा मार्केट नहीं है दुबई. और लंदन तो मुझे एज अ यूके ही मुझे एकदम अजीब, मुझे तो इंडिया आई एम सुपर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाटएवर आई कैन इन दिस कंट्री. लाइक आई वांट टू बिकम द वो ना द शिट. मेरे ऐसे पुतले पे ऐसा पानी वानी दूध. मेरे को अभी एक ख्याल आया
कि हम लोग दूध का अभिषेक होना चाहिए. भविष्य बोलती है भविष्य को क्या खिलाया पहले, भविष्य का ख्याल मत जाने दे. मेरे को ये ख्याल आया, why are we waiting for people to come to us? Yeah. जाओ, shoot your shot. We should all have like, you know, अगर कुछ ख्याल आता है, so we should probably have either a team member or ourselves go out and you never know, man. You can shoot your shot. प्रखर ने hundreds के साथ collab किया, collab के time पे. True. And it's not like Bobby has any dearth of people DMing him, right? Correct. Like I know 10 other people who've DM'd him. Yeah. Something somewhere you look, it's all about perspective and like sort of like who's vibing at the same on the same plane. ईगो का डेथ सही होना बात चाहिए है. और उसके बाद देन द गुड वर्क विल हैपन बियॉन्ड दैट. आई फील Ego death. Fact. नहीं मेरे को सो यू नो ऑन सैवल रो राइट, अपना इंडियन बंदा है ऑन सैवल रो, सर्जन क्लोथ सर्जन. cloth surgeon. Just talking to him on Instagram. I went Ravi. Okay, I went and I met him. Family man, great guy. उसने भी बात किया था कोलैब के लिए कि बिकॉज ही इज़ लाइक यू नो कभी हम इंडिया में एंट्री करेंगे या इंडिया में भी हमको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए. ग्रेट, मेरे को बहुत मज़ा आया, मेरे को मन हुआ करने का. तो ऐसे कुछ आई थिंक यू आर राइट, कर तो कोशिश तो कर ही सकते हैं छोटा मोटा इधर उधर. मेरा क्या है पता है, मेरा ना हम लोग ट्राई किया था ना Jaywalking एक्स कैप्सूल, याद है वो जो ओ, कोविड टाइम में वो- ट्राई किया था, वो धुल गया बिकॉज़ ऑफ फैक्ट्री यूज्ड एंड ऑल. पीसेस बन भी गए थे. पीसेस बन गए थे, बहुत बेकार बने थे. टी-शर्ट्स एकदम V-neck before V-neck came back. Yeah, because we didn't have t-shirts at that point and I think we couldn't have put out a bad looking product. वो Yeah, टी-शर्ट्स yeah, अभी भी warehouse में पड़े हैं. We should do something to revive them because product shouldn't go waste. True. But we tried, right? But for future में कभी होगा तो फिर हम लोग करेंगे. But I think brand brand collaborations, अगर मान लो, why are we waiting for bigger brands? Yeah, to, right. Like that's a great place to start. streetwear brands आपस में collab करें ना. Like that is where it needs to happen first. और मुझे ऐसा लग रहा है ना 2-3 कोलैब में बाकी सब फिर लाइब्रेरी खत्म हो जाएगा सब, और तो कौन ही है. जब खत्म होगा तभी और कुछ निकलेगा यार. It'll start like चलो why hope कर सकते हैं. why put a बाधा before we even You cross all that want to, bridge? you know, me and Blue Orange were बीच में really thinking of creating a prize award कि हम कुछ 10-20 लाख रुपया जमा करेंगे और we'll run a contest and like we'll give it away to actually the kid who wins it. And ऐसा हमने genuinely सोचा था इसके बारे में, पता है. हम लोग ने भी सोचा था during Women's Day that you know we will platform, we will help a woman entrepreneur, someone who wants to start a brand. Yeah. But maybe now's the time. और बताओ तुमको क्या, like what do you feel, स्टाइलिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, स्टाइलिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है इन You know, मैं culture? तेरे को बताऊँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया है. Every time a couple walks into the store, no, it's the women always making the men conscious, Yeah, isn't it? yeah. Why? ये तो तू पहनता नहीं है. Mic drop. वहाँ ये से तुझे इशारा हो रहा है, mic drop. No, really, I have really noticed this and I have to like sometimes I have to call them out and be like, उसको पहनना है तो पहनने दो ना. मतलब why are you stopping him from? And I feel like there is a unsaid rule कि men has to dress simple. I know you and me, we meet some interesting men, but that's not all of it. That's very little of it. Yesterday we were complaining about men only buying basics, and we are dominantly being purchased by men. And how do we end up? Because I think if women also want men to really step up their style game, they should stop making us conscious and give us a compliment, for fuck's sake. Yeah. For once sometimes, you know what I mean? Like, I don't know, like as women we always love when men dress fresh. I'm not talking and about things only like you that. two. No, I'm just saying, like I'm not able to understand the psyche behind those women. Yeah. नहीं, but this Skinny jeans पसंद है. नहीं, but this is so true. मैंने मतलब हम लोग ने we made a joke about it also. I told the staff that if a couple walks in, then you know, engage the women, let the guys Yeah. sort of, and you know, let them experiment. इंडिया में ना अपने को अटेंशन फ्री का मिलता है, फ्री का. Like if you really like you go to a club and as a boy, if I really wear a massive Jaywalking logo and in the smoking area I just light up a cigar, everybody's gonna look at me. We do get free attention. I don't know why do we not really do anything about it. You know what I mean?
सो अभी आई थिंक इस टाइम देखते हैं अभी. वही तो कल्चर चल रहा है, तुम लोग तो एकदम दैट्स वाई तो 2 ब्रांड्स हल्ला मचाए हुए, जे वॉकिंग, ब्लू ऑरेंज. कोई क्लब में जाओ, 20 लोग हैं, उसमें 10 लोग जे वॉकिंग पहने, 10 लोग ब्लू ऑरेंज पहने. यही तो है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ ट्विन ऑफ ईच अदर. यही चल रहा है. अरे सो वी हैव दिस होल पॉडकास्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअलिटी, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. True. सब एक ही चीज पहन रहे हैं. जैसे अभी तुम्हारे स्टोर में भी there are so many non-branded pieces also, right? Yeah. From a वो fashion नहीं बिकते हैं. perspective, जो नहीं बिक रहे हैं, like why? You know this Why pant do that I you wear want to every. be seen in the same t-shirt like 5 other people in the same room? यार you know Why is उससे that याद happening? आया Stussy, जब हम लोग when we used to stock Stussy, they've changed their distribution strategy and stuff, so we don't have Stussy anymore. And a lot of people keep asking us, but there was a requirement that 60% of the order buys had to be from their sort of more of their quiet luxury, not loud branding, cut and sew. Like you were not allowed to, as a stockist, we were not allowed to buy more than 40% of their just like Stussy printed t-shirts. And brands also need to do this. हमको याद है हम लोग जब Puma में थे ना, so if you wanted to be a premium brand or a sort of like in that sort of higher tier, you can't open so many stores, right? Like, and like stores also have to have a certain you have to restrict the flow in a certain sense. हम लोग को एक इंटरनेशनल ब्रांड ने बोला था ना कि MOQ हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अमाउंट इज $5,000. ऐसी फटी थी हमारी. लाइक हाउ विल वी डू दैट भविष्य? हम लोग इतने ब्रांड्स सोच रहे हैं, पैसा इतना ही है, कैसे बांटेंगे? अब टेंशन नहीं होता, अब धीरे धीरे हो जाता है. अब हम लोग बोलते हैं बस भविष्य, तो अब मेरे को कल ही हम लोग वी वर प्लेसिंग एन ऑर्डर, बस $20,000 का ही है, इतने में हो जाएगा काम. नहीं, और मतलब प्लानिंग बहुत चाहिए होती है, यू नो, कि प्लानिंग एंड प्रोजेक्शंस एंड यू नो जस्ट बीइंग कॉन्फिडेंट कि जो खरीद रहे हो वो बेच पाओगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इवेंचुअली बिक ही जाता है बिकॉज रीसेंट अपना एक नया रीसेंट कॉन्वर्जेशन ये है कि जे वॉकिंग इज ऑल्सो एट कैप्सूल नाउ. And you know, with the confidence that Bhavisha has said ki, you know, 3 months is all I mean, I know you guys know what you're doing now, and it's always like a trial and error situation. Trial and error तो नहीं कहेंगे, like try and build, like Try and we say, build. trial and Keep at it. The thing is, everything, there's a way to sell everything, right? If one doesn't work, it has to work. So you've got to just find out. Problem statement is important. Solution, have the patience to find the solution. I think Yeah. पता है अच्छे ज़्यादा रेंज वाले ब्रांड्स तो अभी 3-4 जो बन रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर किसी को स्ट्रीटवेयर में एंटर करना है या फिर जस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मेकिंग में एंटर करना है ना, पीपल शुड आल्सो लुक एट जस्ट डूइंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स. जरूरी नहीं Yeah. कि तुम 50 स्टाइल्स डालोगे तो ही रेंज बनेगा. कुछ एक प्रोडक्ट बनाओ बट धांसू बनाओ, स्टोरी टेलिंग करो, तब मजा आएगा. यू नो द Yeah. ब्रांड दैट वी हैव प्लेसेस और फेसेस, उनका पहला प्रोडक्ट जो हमने देखा था दैट वाज एक्चुअली अ प्रिंटेड बुक. इट वाज अ पोलरॉइड्स का बुक. सो द Oh. फाउंडर इज अ फोटोग्राफर, सीसे, एंड ही Founder is a DJ, no? no Yeah, one founder is a DJ, one founder is a photographer. So the photographer guy, they compiled all his work of the Polaroids, the portraits that he had taken, and that was the first product, the book. जरूरी नहीं कि सबके merchandise ही start हो जाएंगे. Yeah. Like do interesting concept, parties throw करो, like make money out of that. Do something interesting because the country needs everything. Like Become coveted. You know, that one point that you said, no, it's so important. If you want to build a brand, the brand doesn't only have to be product, it can be anything. Product can be an extension. Today you can have t-shirts, tomorrow you can have something else. Day after you can just have a drop like of food or kuch bhi, yeah? Become coveted. Yeah, that is one thing I as a brand has to really learn from you guys, because I know I keep seeing stories. करने की जरूरत नहीं है नहीं अभी. नहीं बट करना है. मैं अपना हमारा ओपनिंग हुआ, तुम्हारे ओपनिंग में कितना फर्क था ना पॉलिशनेस का, तो वो हम सीखेंगे. बट आई थिंक Hire us for the next opening. चलो अभी हाथ मिला लो, कितना लेने I वाले हो can अभी deal से that बोल. In the last podcast also I said कि you know this feels like we are sitting in sauna and like business deals are happening, but बस steamy था क्या तुम्हारा conversation? oh that steam room is different. But anyway, thank you so much for doing your first sort of podcast with me on JAYTALKIng, and hope. तुम्हारे कितने प्रोफाइल्स बने हुए यार. कल जे बॉन्गिंग भी बना है भाई द वे. Really? जे प्लेइंग, जे बॉन्गिंग, जे बॉल्डिंग, जे टॉकिंग. जे बॉल्डिंग तो अभी नया है, हाँ. बट वो तुमने ही बनाया ना? नहीं. अरे तेरे को पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या नड़ता है? मेरा आज तक कोई फैन पेज नहीं है. थोड़ा. What do you think all these are? Like fan pages only. No, I want like a proper fan page. I want like proper. फिर
फिर तो यू विल हैव टू बेसिकली या तो पैपराजी तुम्हारे विरल भयानी भैया Actually, तुम्हारे मुझे पीछे लगे रहे पे करना पड़ेगा. हाँ, या फिर सेकंड इज कि तुम मिस्टर वॉकिंग को प्राइवेट से पब्लिक पेज कर दो, तब तो लोग ये बात भी सही है. तो you want to be a public figure but you don't want to be a public figure, ऐसा नहीं चलेगा. कानिए के जैसा. अच्छा चलो. Thank you for having us on this podcast. Thank you. We had a great time. But thank you so much. I hope you all have gotten something out of it that you all can do something with. And बस जरूरी नहीं है कुछ लेना ही है, मतलब एंजॉय करो, पॉडकास्ट एंजॉय करो और क्या. पॉडकास्ट एंजॉय करो, हमारी बकचोदियाँ सुनो बिल्कुल. और हमारे एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखो. हाँ, हमें भी आगे सुनाओ हमारी अपने. और कभी भी हमारे स्टोर पे आओ तो तुम जो भी करते हो वो, या अगर हम नहीं हैं तो कुछ रख के जाओ, कुछ बता के जाओ. यू नो वी आर वेरी 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 मच अवेलेबल. हमारा टीम हमको बताता है अगर कोई आके बोलता है कि ये अपने ओनर्स को बताना. यू नो व्हाट आई मीन. तो मतलब इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस तो पहुंच ही जाते हैं, वेदर Messages तो इट्स पहुंच ही ईमेल जाते हैं, correct. और डीएम्स व्हाटएवर, मैसेजेस पहुंच जाते हैं. तो बिंदास अगर ऐसा लग रहा है कुछ ढंग का डेवलप कर रहे हो और हमको दिखाना है तो स्टोर पे आ जाओ कभी भी. यू नो और सुनते रहिए जे टॉकिंग. बाय. थैंक्स. गुड Thank नाइट. you. शंबक है.